हाय चिल्ड्रन, नमस्ते। आप कैसे हैं? कुशल है ना? मुझे आशा है कि आप सब कुशल होंगे। आपका स्वागत। वेलकम टू हिंदी वीडियो क्लास। व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे? यस, पार्ट 12 स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस means Independence Day. Divas means day. Swatantrata means independent. Dear children, do you know when is our country got freedom? Yes, very good. 15 August 1947. Freedom fighters fought for the freedom of the country. Because of them, we are celebrating Independence Day. They are revolutionary, and someone used the non-violence as the weapon against the British. India got independence on 15 August 1947 due to struggle of our freedom fighters to make it independent. Okay, let me start. भारत में कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं. In India, there is many festivals are celebrated. भारत में कई प्रकार, कई means many, कई प्रकार के त्योहार. त्योहार means what? Yes, festivals. There are many festivals celebrated in India. इन त्योहारों को हम उन्हें दो भागों में बांट सकते हैं. We can, there is two part. त्योहार हम दो भाग, there is two part we can segregate. Okay, first one, धार्मिक त्योहार. धार्मिक त्योहार means what? Yes, दीपावली, पोंगल, दशहरा, होली, these all are धार्मिक त्योहार, means religious festivals. Second one is राष्ट्रीय त्योहार. It is celebrated for our nation. राष्ट्र means nation. राष्ट्रीय त्योहार means national festivals. Independence Day, Republic Day, Gandhi Jayanti, these all are national festivals. Okay, धार्मिक त्योहारों में दीपावली, होली, दशहरा, क्रिसमस, ईद आदि प्रमुख हैं. In this religious festival, दीपावली, होली, दशहरा, क्रिसमस and ईद. ईद means रमज़ान. These all are important festival. No, आजकल इन त्योहारों को हर कोई मनाते हैं. आजकल means nowadays, these festivals celebrated by all people. हर कोई, all Hindu, Muslims, Christian, all religious people are celebrated in these festivals. Okay, राष्ट्रीय त्योहार प्रमुख रूप से दो हैं. नेशनल फेस्टिवल्स आर इन नेशनल फेस्टिवल. टू इज इम्पॉर्टेंट. दो प्रमुख रूप. प्रमुख मीन्स इम्पॉर्टेंट. 15 अगस्त के दिन मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी के दिन मनाया जाने वाला गणतंत्र दिवस. One is 15 August. Every year we celebrated Independence Day. Another one is January 26. What is this? Yes, Republic Day. Ganatantra Divas. Ganatantra means Republic. These all are celebrated. मनाया जाता है. मनाया जाता है means celebrated. भारतीय इतिहास में इन दो त्योहारों का अपना विशेष महत्व है. इन इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, in our Indian history, these two festivals are
very important, special important given. ओके, इन दिस दो त्योहारों का अपना विशेष महत्व, स्पेशल इम्पॉर्टेंट गिवन इन आवर इंडियन हिस्ट्री. ओके, सैकड़ों वर्षों की गुलामी से इस दिन हमें मुक्ति मिली थी. 100 मीन्स 100, सैकड़ों वर्षों, hundreds of years, many hundred years. गुलामी इस दिन हमें मुक्ति मिली. we have slavery. In this day only we got freedom. Mukti means freedom. Gulami means slavery. In this is दिन हमें what get? Yes, मुक्ति मिली थी. We got freedom. इस स्वतंत्रता के लिए हमें कई वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा था. फॉर दिस फ्रीडम, इस स्वतंत्रता के लिए मीन्स फॉर दिस फ्रीडम वी गॉट मेनी स्ट्रगल्स. कई वर्षों, मेनी ईयर्स वी गॉट स्ट्रगल्स. आवर नेशनल लीडर्स गॉट स्ट्रगल्स. संघर्ष मीन्स स्ट्रगल्स. अनेक वीर मारे गए. Many soldiers are killed by British. मार means kill. अनेक वीर मारे गए, killed. ओके, कई लोगों को मृत्यु दंड मिली. Many people got death punishment. मृत्यु दंड means death punishment. Kattabomman got death punishment, no, that like मृत्यु दंड मिला. सैकड़ों लोगों ने जेल यात्रा की. एंड देन हंड्रेड्स ऑफ पीपल वेंट टू जेल यात्रा. ओके, अंग्रेज शासकों ने हमारी आज़ादी की लड़ाई को बड़ी निर्दयता से कुचलने की भरपूर कोशिश की. ब्रिटिश रूलर्स, अंग्रेज शासक मीन्स British rulers, for our fight, they to crush merciless. Nirdaya means merciless. To crush merciless. भरपूर कोशिश की. They tried to crush merciless. ओके, वे अपने कार्य में सफल नहीं हो सके. Did not, but they did not got success in their work. Karya means work. They tried to crush merciless, but we only got success. They didn't get success. वे विवश होकर स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए तैयार हो गए. Then they are try to give freedom. Okay, तैयार, ready to give freedom at last. अंत में 14 अगस्त हम सन 1947 को रात के 12 बजे अंग्रेज शासकों ने हमारे हाथ में शासन की बागडोर सौंप दिया. 14 अगस्त 1947 मिडनाइट, रात के 12 बजे. 12 बजे मीन्स 12 o'clock. 12 मीन्स 12. 12 बजे they give our rule. बागडोर सौंप दिया. they hand over our country. ओके, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती Rajagopalacharya. In our freedom India, there is first governor general was चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य तथा प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू बने. and first prime minister of India, who, yes, पंडित जवाहरलाल नेहरू became. okay, तब से प्रतिवर्ष 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाते हैं.
तब से, that day onwards. तब means that day. प्रति वर्ष, every year 15 अगस्त, August 15 we celebrate Independence Day very grand manner, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं. We celebrate that very grand manner. Okay. स्वतंत्रता दिवस के दिन सरकारी तथा गैर सरकारी सभी कार्यालयों की छुट्टी रहती है. On the Independence Day, government and non-government, all the office got holiday. छुट्टी means holiday. देश की राजधानी दिल्ली में तो विशेष प्रकार का समारोह किया जाता है. What is our capital? Yes, देश की राजधानी दिल्ली. Delhi is our capital, no? There is a special ceremony was conducted in every year. Okay, विशेष प्रकार का समारोह means ceremony is conducted. प्रधानमंत्री को तोप से सलामी दी जाती है. Our Prime Minister got salutation by gun. Okay, तोप से सलामी, gave the gun salutation. Okay, किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है. In Red Fort, किला means fort. किले पर राष्ट्रीय Red Fort, our national flag is hoisted. Okay, राष्ट्रीय ध्वज means flag is hoisted every year. इस समारोह में विशेष अतिथि भी सम्मिलित होते हैं. In this ceremony, विदेश अतिथि, our foreign guest. विदेश means foreign, अतिथि. Who is अतिथि? Yes, foreign guests also come and celebrate this day. Okay, विभिन्न राज्यों की राजधानियों में भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जाता है. विभिन्न राज्य, different states capitals also celebrated very grand manner this Independence Day. Okay, विभिन्न राज्य, different states. राजधानी means capitals. स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जाता है means celebrated very grand manner. धूमधाम means grand manner. Understood, my dears? Very good. Next, we are going to learn Shabdarth meanings. First one, Swatantrata Divas. Divas means day. Swatantrata Divas means, yes, Independence Day. Shashak. Who is Shashak? Yes, ruler. Ganatantra Divas. Ganatantra means Republic. Ganatantra Divas, Republic Day. Pradhan Mantri. Mantri means minister. Pradhan Mantri. Who is Pradhan Mantri? Yes, Prime Minister. Next, Itihas. Itihas means history. Okay. Pradivarsha, every year. Varsha means year. Pradivarsha means, yes, every year. Gulami, slavery. Gulami means slavery. Next, Sarkar. Already you know Sarkar. Sarkar means, yes, government. Doom Dam, very joyful, grand manner or joyful. Top, cannon. Top means cannon. Rashtriya Dvaj, national flag. Janda also flag. Here one given another meaning. Dvaj, Rashtriya Dvaj, national flag. Kile means fort. Lal Kila means Red Fort. Pahadi Kila means
पहाड़ मीन्स माउंटेन, पहाड़ी किला. Okay, राजधानी कैपिटल, कार्यालय ऑफिस. नेक्स्ट उल्टे शब्द ऑपोजिट. फर्स्ट वन स्वतंत्र. What is स्वतंत्र? Yes, freedom. The opposite paratantra. Paratantra means not freedom, slavery. Okay, स्वतंत्र opposite paratantra. Apna. Apna means one's own thing. Paraya opposite paraya. Paraya means others. Apna means own, paraya others. Okay, azadi. Azadi means freedom. Gulam. Gulam means slave. Okay, safal. Safal success. Asafal. Only add means it is opposite mean. Asafal, not success. Okay. Next, रिक्त स्थान भरिए. Fill in the blanks. First one, राष्ट्रीय त्योहार में dash प्रमुख हैं. National festivals are dash types. Dash important. प्रमुख means important. राष्ट्रीय त्योहार means national festival. Dash is important. How many importance? Yes, दो प्रकार, दो प्रमुख. Two is important. One is स्वतंत्रता दिवस, another one is गणतंत्र दिवस. नेक्स्ट, सैकड़ों वर्षों की डैश से इस दिन हमें डैश मिली थी. 100 years. सैकड़ों वर्षों means 100, many hundred years. Dash in this day, dash got. We got dash. What is the answer? Yes, सैकड़ों वर्षों की गुलामी. गुलामी means slavery. इस दिन, in this day only we got dash. Yes, mukti. Mukti means freedom. Okay, many hundred years we have slavery. In this day only we get freedom. अनेक वीर डैश गए. अनेक वीर. वीर means soldiers, brave person. Many brave person dash. Yes, answer is मारे गए. Many soldiers were killed by British. मारे गए. अंग्रेज डैश स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता प्रदान करने की तैयार हो गई. विवश. आंसर इज विवश होकर. स्वतंत्रता प्रदान करने की तैयार होते हैं. तैयार मीन्स टू हैंड ओवर, रेडी टू हैंड ओवर. ओके, प्रधानमंत्री को डैश से सलामी दी जाती है. सलामी मीन्स सल्यूटेशन. हाउ टू गिव सल्यूटेशन बाय द सोल्जर्स फॉर प्राइम मिनिस्टर. यस, प्रधानमंत्री को तोपों से सलामी दी जाती है. दे सल्यूट बाय with cannon. Top means cannon. Give salute by cannon for our prime minister. Okay. Next, अनुवाद, translation. First one, भारत में कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं. भारत means इंडिया. कई प्रकार के त्योहार, many festivals मनाए जाते हैं, celebrated. There are many festivals are celebrated in India. Okay. स्वतंत्रता के लिए हमें कई वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा था. संघर्ष means struggle. We were struggled
many years for getting freedom. For freedom we get struggle by many years. कई वर्ष means many years we got struggle. Okay. स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य तथा प्रथम प्रधानमंत्री पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू बन गए. The first governor general of Chakravarti Rajagopalacharya and the first prime minister of Pandit Jawaharlal Nehru were the independent India. Okay. Next we are going to learn Rangon ke naam, colors name. Do you know all the colors name? Yes, some colors name only we know. Now we are going to learn many colors name. Okay. First one, what? Yes, white. White means safed. What is the Hindi meaning for white? Yes, safed. Give an example for white color. Yes, milk. Yes, very good. Next, yellow. Yellow means peela. Yellow Hindi meaning what? Yes, peela. Like example. Yes, very good. Nimbu, lemon. Lemon is yellow in color. Very good. Next, orange. Yes, very good. The orange, carrot, orange also orange colors. Next, red. Orange means santra. Santra. Santra means orange fruit. Okay. Next, lal. Lal means red. Which is red in color? Yes, apple, tomato, etc. Okay. Next, pink. Gulabi. Gulab means rose. Gulabi means pink color. Okay. Next, purple. Purple and violet. Both are baingani. Both are same meanings. Baingani. Okay. Next one, Neela. Neela means blue. Next, Hara. Hara, green. Next one, Bura. Bura, brown. Next, grey. Dusar. Grey means dusar. Next, Kala. Kala, black. First one, Safed. Safed means what? Yes, white color. And Peela, yellow color. Santra, orange. Lal, red. Gulabi, pink. Baingani, purple and violet. Both are baingani. Neela, blue. Hara, green. Bura, brown. Dusar, grey. Kala, black. Understood, my dears? Yes. Next we are going to learn spoken Hindi. First one, आकाश का रंग क्या है? What is the colors of the sky? Which is the color of the sky? Yes, आकाश का रंग नीला है. आकाश का रंग क्या है? Yes, sky is blue in color. Okay. आकाश, आकाश means sky. आकाश का रंग क्या है? Yes, नीला, blue color. Next, टमाटर. टमाटर का रंग क्या है? What is the color of tomato? Yes, लाल. Answer is लाल. टमाटर का रंग लाल है. Okay. Next, दूध का रंग क्या है? Yes, what is the color of milk? दूध का रंग सफ़ेद है. The milk is white in color. Understood, my dears? Yes.
My dear children, this स्वतंत्रता दिवस पाठ के शब्दार्थ, fill in the blanks, translation, these all are write your notebook, write neatly and then prepare well. Okay. Next, the spoken Hindi also, colors name and this spoken questions also prepare well. After that, you will discuss with your siblings, friends, relatives and your parents. Okay. I hope it is very useful for you. Dhanyavad. Thank you, my dear children. Bye bye.